This has to be one of the most challenging things in Indian cooking, which is roti. That's what I'm gonna try abhi. Now this is the atta we have. Basically, मुझे लगता है कि I have made rotis, but I don't think I've made rotis more than 20-25 times in my life. और आटा हमारे यहाँ मतलब इतना कम ही यूज़ होता है कि it's good to keep in freezer ताकि ख़राब ना हो. So let's see. तो टारगेट है मेरा 10 रोटी बनाने का. 10 रोटी के लिए let's see. थोड़ा और ऑलरेडी गंदा होने लगा. तो समस्या रोटी का यही है, इतना साफ सफाई का इश्यू है, करना मुश्किल है. अभी ऑफ कोर्स कई सारी समस्याएं रोटी के साथ. सबसे इम्पोर्टेंट तो ये नीडिंग. शायद इसको 10 ना बने. ट्राई करते हैं. सो वन ऑफ द समस्या मतलब जो रोटी के साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ है मेरे, वो बहुत डिफरेंट काइंड का हुआ है. इट हैज़ आई अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ मैनी थिंग्स टू डू विथ आटा गूंथना, which is obviously very hard. और ऐसा कोई the only learning I have is from I think बचपन से observe करते हुए मम्मी को, and यहाँ आने के बाद जब भी ज़रूरत पड़ी तो उसको रिकॉल करते हुए कि इस तरीके से गूंथना चाहिए. और आई थिंक इसी के कारण I think I should have put a little bit of oil and some namak. I don't know, डालते हैं कुछ लोग, maybe शायद it affects, works well. So I would like to know, मैं actually genuinely जानना चाहता हूँ tips on आटा गूंथने का क्या टेक्निक है, या फिर the things जैसे मैं क्या गलती कर रहा हूँ यहाँ पर. I have this, मुझे लगता है कि दिस स्टेट में ऑलरेडी बहुत जल्दी पहुंच गया मैं. इज दैट अ गुड थिंग, इज दैट अ बैड थिंग? आई थिंक लास्ट राउंड हल्का थोड़ा और पानी. I think I'm pretty satisfied. It's looking good.
अभी तक चीज़ें सही जा रही हैं। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट, यस, फेयरली सॉफ्ट। ठीक है, I will let it sit for maybe 10 minutes. I'll be back in 10 minutes. So approximately 10 मिनट हुआ है। तो मैं इसमें सबसे पहले आई थिंक 10 रोटी का एस्टिमेट सही है। 1, थोड़ा सा चिपचिपापन लग रहा है मुझे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 इज फाइन। तो मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं पहले सभी को बेल लूँगा और उसके बाद इकट्ठे बनाऊँगा। सो दिस इज स्टेज 2 ऑफ बेल के प्रिपेयर करना। It is good. Nidhi will probably have 2. I'll have 6. So this is a challenging part. Right, the challenge starts now. सबसे पहले ये साफ ही है। थोड़ा इसमें लगा देता हूँ प्रिपरेटरी। ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ है। ऑफ कोर्स रोटी बनाना इज नॉट हार्ड फॉर नथिंग। I'm pretty happy with the softness. How it's looking. मुझे पता है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपके बेलने के प्रेशर से ही रोटी टर्न्स, और जो मुझे उठा के टर्न करना पड़ रहा है वो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। इफ़ आई कुड ओनली पुट द प्रेशर इन द राइट वे, which of course needs experience, so it's not gonna happen. यहाँ पर now still the test is on. It all depends on how the roti turns out eventually, right? So I will be back in a minute. Okay, so I'm back for the final test. Let us see. मुझे लगता है कि तावा गर्म हो चुका है sufficiently. We will start with our first roti. So, acha, one of the reasons we are having roti is because we have bhindi today. That's our bhindi made by Nidhi थोड़ी देर पहले।
litmus test is here. We will see. I think पहला वाला is always tricky क्योंकि थोड़ा heat issues होता है in the sense things are not hot enough. It's showing promise. Showing promise. Maybe not the best, but not bad at all because कहीं से भी leakage नहीं है. But this color here should have been better, I guess. And the second one is ready. I think मेरा ये flip थोड़ा जल्दी हो रहा है. Let me just seize this. Now. I think this is high temperatures. Good. पहला और आखिरी. That's good. But again, if you're thinking this is आखिरी, that's not the case. Because I'll show you what the आखिरी is. This is आखिरी. Nidhi is really preferring ghee these days, so I think I can put some ghee. This one. Looking fine. I tear it. It's good. एक भिंडी लेके very good. I mean, not bad. After all, it's me. So thank you for suggestions that you're going to give me.